Never do it on the first night. Allah prohibited. I know it's very controversial to speak on this topic क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे के बारे में बात करने में बहुत सारे लोगों को शर्म आती है, तो हम कुछ बोलेंगे नहीं, हम इस बयान को सुनेंगे और समझेंगे कि निकाह जो हो जाता है शादी के बाद क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमें परहेज करना चाहिए। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से। ये वीडियो ना आप स्पेशली उन सब लड़के लड़कियों को भेज दीजिए या अपने यूथ क्लब्स है ना, मतलब ऐसे फ्रेंड ग्रुप्स जहाँ पर बहुत ज़्यादा नौजवान लड़के लड़कियाँ हैं जिनकी शादी हो सकती है साल 2 साल 4 साल में, उन्हें ये बयान सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि यार लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इंसान अगर अपनी शादी से पहले सुन समझ लेना तो ही बढ़िया रहता है। अदरवाइज़ क्या होता है, निकाह हो जाता है, उसके बाद बहुत सारी ऐसी सी चीज़ें होती हैं जिसे करने के बाद एक इंसान अफसोस करता है कि काश ये मुझे पहले पता होता ना। तो आपको अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है, हम इस वीडियो को देखेंगे और समझ जाएंगे चीज़ें। आई एम ऑल्सो वेरी यंग एंड आई होप आप भी यंग होंगे, और नहीं तो भी आपकी फैमिली में बहुत सारे ऐसे यंग मेंबर्स होंगे जिनके बीच में ये वीडियो जाएगा। एंड ऑल्सो एज द वीडियो सेज, नेवर डू इट ऑन द फर्स्ट नाइट। अल्लाह हैव प्रोहिबिटेड इट। तो अल्लाह का हुक्म तो हमें मानना ही होगा ना, उसका कोई दूसरा सब्सटीट्यूट नहीं है हमारे पास। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग राइट। और ये वीडियो इंग्लिश में ही है तो सिंपल टू अंडरस्टैंड होगा, अगर नहीं भी आता है तो इट्स ऑल राइट, मैं बैठी हूँ यहाँ पे, मैं समझा दूंगी। For the first night, one of the biggest aspects of nikah is to basically consummate the marriage, right? Because that's a desire that husband and wife have, and this is the halal way of fulfilling that. Okay. So some people may feel that there's an urgency to do this. However, it is not a sunnah necessarily that on the first night that this must take place. And that's why you have to be sensitive, because it's possible that these last few days or weeks have been very, very busy for the couple, right? Of course, once they are married, there's going to be a lot of enthusiasm, but a lot of the time people are tired or whatever the case is. So always saying is proceed carefully, relax, get to know one another, especially if you've done it in a halal way where you've not basically had a taste of one another beforehand. Because unfortunately there's a lot of cases where people get to know one another too much and they've been dating and they've done basically everything that what you're supposed to be looking forward to for your day of marriage. All that barakah is gone. So really, if it's a couple who've been trying to be righteous and so on, there's going to be an urgency, there's going to be a barakah and so on. You want to try to break the ice, right? You want to try to break the ice, get comfortable with one another. And generally, if you've done your due diligence, if you found somebody who you think is compatible, you've made the inquiries, you've tried to understand the personality through other people and so on, and you've made a bit of investment like that then basically, once the nikah has been done, husband and wife become halal for one another. One of the things that you should avoid is you should not be playing hard to get. Otherwise, it could leave a lasting negative impression on the other. So if the husband just plays hard to get or the wife plays hard to get, it's just not, you're halal for one another. You should basically be both giving it your full. Generally, the advice is women should not play hard to get and men should take it easy, because generally those are the problems. Obviously, when somebody's still a relative stranger, you may be a bit uncomfortable how far we can go. And of course, there's the natural inhibition, the natural haya that somebody has. You don't expect on the first day just to reveal it all, as they say, right? There could be a natural inhibition or a reservation at this stage. So you need to take it feeling insecure and so on. So start praising one another. Praise them. Make it easy for them. Make it comfortable for them. These are specific sunnah recommendations for this night. There's a hadith related by Imam Tabarani which says that the couple should offer 2 rakats of prayer together in congregation. So when you come together, whether you're going to a hotel room or your own apartment or your friend's apartment or whatever, however you want to do this the first night, you first get together, do wudu, and you pray salat. Number 2, then the husband is also advised to hold the wife's forelock, which is the hair at the front, and recite the following prayer. The wife can also make this dua. But because the Prophet ﷺ is speaking to men, he said it to her. He said, Allahumma inni as'aluka khayraha, and she would say khayrahu instead, right? Wa khayra ma jabaltaha alayhi, wa a'udhu bika min sharriha, wa sharri ma jabaltaha alayhi. And if she's reading it, she'll just change the ha to hu instead. Basically, it just means, oh Allah, I ask you for the good in her or him, and the good you have predisposed her to, or him. And I seek your protection from her evil or his evil, and the evil you have predisposed her or him to. This should inshallah keep the shaitan away and protect you from any ill that may come about. Number 3, it could be a recommendation at this point to give a special gift. This is when I think the marital gift should be given. Not mahar, but a special, private, personal gift. And preferably give something that they will remember forever, right? A box of chocolates will be eaten up. Because the Prophet ﷺ said, tahaddaw tahabbu. Give gifts to one another, and that will create love. And this is the person you want to create love with. So use everything that the Prophet ﷺ is encouraged to create love with. Now, if you're already married and you didn't do this, you can still have a special night and say, let's do this again, let me give you a gift. Number 4, this is from the sunnah. The husband could also offer his new bride something to drink, a nice juice or something, or anything, even water.
Okay, number 5. This is where nobody else should be there afterwards, obviously, because if they decide to get intimate and make love, the couple then should first recite the dua, special dua, which is Bismillah, Allahumma jannibna shaitan wa jannibi shaitana ma razaqtana. You should memorize this dua. It is very important because remember, this is all about the big idea of marriage, which is to produce children and the next generation. And you want to make sure you do everything right to produce the best children. Shaitan is there to cause problems right from the beginning. So what this dua means is, in the name of Allah, oh Allah, distance us from the Satan, and distance Satan from what you have granted us. So we don't want our child to be affected by the shaitan as well. Now another point to keep in mind here is that it's forbidden anytime, not just this night, anytime, to reveal the details of your sexual intimacy with your spouse to anybody. There's a weird custom among some people that they pressure a person getting married, like a woman or a man, to reveal the details of their first encounter, and they compare it with one another. Totally haram and wrong. This is a betrayal of your partner's trust. The Prophet ﷺ said in a hadith, Sahih Muslim, amongst the most evil people according to Allah on the Day of Judgment is a man who has sexual relations with his wife and she with him, then he spreads her secrets. Likewise, if a woman does the same for her husband. As a final advice, I just want to mention that do not play jokes on one another on the first night. You don't know the other person properly enough and it could go wrong. वाओ, इट वॉज अमेजिंग वीडियो. हमको इतना कुछ समझा दिया ना इस वीडियो के अंदर. देखिए, ये वो सारी जानकारी है जो एक नवयुवक को पता होनी चाहिए बिफोर गेटिंग मैरिड. क्योंकि मैंने मेरे खुद के फ्रेंड ग्रुप्स के अंदर ये ट्रेंड देखा है, एज आई एम अ फुल्ली ग्रोन अप वुमन राइट नाउ, कि वो लोग एक दूसरे से खुद की जो सेक्सुअल लाइफ है उसे शेयर करते हैं. दिस इज वर्स्ट यू कैन डू विद योर पार्टनर एंड योर सेल्फ. आप अपनी अंतरात्मा को चोट पहुंचा रहे हैं ऐसा करके. ये वो बातें हैं जो हमेशा महफूज होनी चाहिए, और ये सिर्फ और सिर्फ एक पेयर के बीच में ही होनी चाहिए. मतलब आप दोनों के अलावा वो बात किसी और तक कभी पहुंचे ही ना. ये आपकी प्राइवेट लाइफ है, पर्सनल लाइफ है. पर हाँ, जाहिल लोग थोड़ी समझते हैं, उन्हें समझाते हैं तो. और मुझे पता है कि आप एक बहुत ही नेक दिल इंसान हैं जो इस वीडियो को बहुत स्प्रेड करेंगे. आई जेन्युइनली आई एम वेरी शॉक्ड राइट नाउ, क्योंकि इतना तो मुझे पहले से ही पता था कि यू शुड नॉट डू इट बिफोर मैरिज. अगर बाई चांस गलती से हो भी गया है तो माफ़ी मांग लीजिए अल्लाह से, क्योंकि वाकई में दैट इज़ द हराम वे ऑफ डूइंग इट. और मुझे ये बिल्कुल नहीं पता था कि आप एक दूसरे के सर पे हाथ रख करके दुआ भी पढ़ते हैं. ये चीज़ बहुत अच्छी है, बहुत लविंग है. और जब भी कोई सेक्सुअल एक्टिविटी की बात आती है ना, तो हम यही सोचते हैं यार कितना गलत है ना, कितना अजीब सा लगता होगा ना. स्पेशली द पीपल हु आर वर्जिन, दे थिंक कि यार कितनी मुश्किल होती होगी. तो ये कोई शैतानी काम नहीं है. इट्स द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लव एंड प्रोड्यूसिंग योर ओन चिल्ड्रन. जिस तरीके से पीपल डू इट एंड पीपल टॉक अबाउट इट, वो बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगता है गलत काम है, पर वो असलियत में ऐसा नहीं है. आप सोचिए, एक ऐसी एक्टिविटी जो कि नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करे, वो तो बहुत ही ब्यूटीफुल होनी चाहिए. तो हाँ जी, असलियत में वो ब्यूटीफुल है भी, बट do it in the proper way as it was mentioned in this video. ये जो सारी दुआ हैं, इनको आप लोग नोट कर लीजिए. अभी तो मेरा मैरिज टाइम बहुत दूर है, बट इफ़ यू आर अबाउट टू गेट मैरिड 1 साल में भी, तो आप ये वीडियो को ना ऐसे बैक करके एंड देन राइट इट. और वीडियो में से मत लो तो भी कुरान और हदीस के हवाले से वो चीज़ें पढ़ करके किसी दीनी ताल्लुकात वाले इंसान के पास जाकर, या किसी मौलवी साहब जो अच्छे हों उनके पास जाकर के आप पूछिए ये सब चीज़ें, और नोट करिए. और अपने स्पाउस को भी समझाइएगा इन फ्यूचर के रिलैक्स, इट्स ऑल राइट. हम कहीं भाग नहीं रहे एक दूसरे से दूर. सो इट्स नॉट नेसेसरी टू डू इट ऑन द फर्स्ट नाइट. अल्लाह हैव प्रोहिबिटेड इट. गो स्लो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर मैरिड लाइफ अहेड. उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा इस वीडियो को देख करके. ऐसी ऐसी बातें पता चली होंगी. मुझे बहुत खुशी हो रही है आज, स्पेशली वो दुआ वाली बात सुन करके ना ऐसे दिल प्रफुल्लित हो गया है. चलिए, अभी आपसे लेती हूँ मैं इजाज़त. अलविदा बिल्कुल नहीं कहूँगी. ख्याल रखिएगा अपना भी और अपने पूरे परिवार का. अल्लाह हाफ़िज़.